Hello guys, welcome back to my channel Kids World. This is Yogita. So guys, today थोड़ा नया सा है क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक HTML फाइल बनाना सिखाऊंगी. So बहुत ही easy way से and just telling you the simple basic things of HTML and also जो आगे वाला वर्जन है जो थोड़ा बेसिक से आगे चल के है वो आपको मेरे चैनल पे बाद में थोड़े दिन बाद आपको मिल जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमें आपको एक HTML फाइल बनाने के लिए आपको खोलना होता है नोटपैड. सो आप नोटपैड खोलेंगे एंड आप इसको अभी सेव मत करिएगा, डोंट सेव इट. सो एनीवेज मैं आपको दिखाती हूँ. मैंने एक ये होली के ऊपर बनाई थी बिकॉज होली इज गोइंग टू कम. आई थॉट लेट्स मेक HTML होली. तो फोटो याद नहीं आ रही क्योंकि वो मैंने अपने डिवाइस से डिलीट कर दिया था, तो आई हैव रीस्टोर्ड इट. सो नेक्स्ट आपने आपको नोटपैड खोलना है, डोंट सेव इट. तो कुछ जो टैग्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स आपको मिल जाएगा. तो सबसे पहले आपको 3 टैग्स लगाने होते हैं फॉर द टाइटल. ओके, सो आप ये कंट्रोल-C करके अपने न्यू प्रोजेक्ट में दोबारा रखें. सबसे पहला टैग होता है ये ग्रेटर एंड लेसर वाले साइन के बीच में HTML करके. देन हेड का लगाना होता है आपको. देन टाइटल, ये हमें टाइटल लिखना है. Let's write my first HTML फाइल एज द टाइटल. एंड किसी भी टाइटल को जैसे आप बॉडी को क्लोज करेंगे तो आप बॉडी के जो टेक्स्ट है उसके बाद आप ग्रेटर एंड लेसर के बीच में बॉडी लिख के उसमें स्लैश लगाएंगे. एंड इफ यू क्लोजिंग द टाइटल यू आर गोइंग टू पुट द स्लैश विद टाइटल. सो टाइटल स्लैश कर दिया. अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, तो मैं आपको यहाँ से बताती हूँ. नेक्स्ट आपको स्टाइल टाइप रखना होता है text/CSS. सो CSS का फुल फॉर्म मुझे ठीक से याद नहीं. लाइक सर्च ऑन वेब व्हाट इज एग्जैक्टली CSS इन HTML so that आपको समझ आ जाए. So CSS is cascading style sheets and it is a style sheet language used for describing the presentation of the document. So it is cascading style sheets. So let's move on. So हमें add करना है CSS and text. So we will write style type हम लोग लिखते हैं. Let's enter and in that greater and lesser sign हम लोग रखेंगे style type with a space. Style type equals to and then do this text/CSS. आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं cascading style sheets and greater sign. And then come to write is body and over the space you write background color. तो आप BG कलर भी लिख सकते हैं, background color. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये BG कलर नहीं देता है, so I'm writing background full form. And you can write anything like I'm just gonna write black and curly brackets. Then the styling is finished for the background. So you will with the slash you will write style again that the style is finished and head is also finished. So you will write head with the slash and then body is going to start, so you write body. Next, for the text, you first of all to increase the size, you write H1, that it is the first line, and for the size also we use H1. And without space, write P style and the style graph style, P, full space,
style. First you will write, and you will write color green. Color, let me write the colors. Color white. White, right? Now you will, for the font size, you will write font, and with this font you will write size, and suppose we write 100 px, 100 px to make it very big, and then it's done, and you will add the size, and then write B, and we'll press enter so that it looks neat and clean. Then you write, suppose I'm going to write, hi, this is my first HTML5 for HTML5. Okay, you will write a comma, and then body is finished, so you will write /body. Okay, so and the body is finished, so next we will going to write /h1 also, because first two thing is done, so we write h1. Okay, so now this is done. HTML5 everything is done here. So मैं यही वाला कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर HTML5 चाहिए कि मैं आपको सिखाऊँ बनाना, तो प्लीज़ आप कमेंट में टाइप करिए इस टॉपिक का नाम, एंड आई विल for sure show you how to make that. So let's save it. You will press Ctrl S, and then on the desktop I'm saving it. So you can write like M first, and then you have to write .html. Please do note it and don't make a mistake in this one. आप कुछ भी नाम टाइप करिए, लाइक आई एम टाइपिंग फर्स्ट, आपको उसके साथ डॉट के साथ HTML लगाना ही है, एंड मेक श्योर इट्स नॉट इन द कैप्स. देन आप सेव एज टाइप में इसका TXT रख सकते हैं, टेक्स्ट रख सकते हैं, एंड एनकोडिंग आप UTF-8 रखिए, 80 रखिए. So let's save it, and let's go to the desktop. The site tabs open, and let's go to the desktop. Okay. So you can see here two are there. This one I had made earlier, and this one is first. मैंने किया था. So you can see कितना बड़ा है ये text. Background color is just perfect black, and on it is white, and the text is there. So इसी टाइप्स आप बना सकती हैं. So ये होली वाला मैंने बनाया था, इसमें पिक्चर वाला बताया कि मैं डिलीट कर दूँ तो ऐसा हो गया था. तो ये मैंने बनाया था. हाई दिस इज HTML. सो दिस वन मैं पहले वीडियो शूट करी थी, बट मुझसे वो डिलीट हो गया. सो या अब मैंने फिर से बनाई. सो पिक्चर्स, एंड दिस कलर is very easy. तो मैं पिक्चर एंड बैकग्राउंड में पिक्चर लगाना एंड a few more things I am going to teach in my next video. तो आप लोग जल्दी से कमेंट में लिखिए आपको क्या टॉपिक में चाहिए, एंड आपको एक और साइट बताना चाहूँगी जिससे कि आप HTML easily लर्न कर सकते हैं. बहुत ईजी है. जस्ट ऑन वेब यू हैव टू राइट W3 schools, and it is a very good site and a free site for learning a lot of things. So you can log into it, and so I had a login on HTML tutorial. So you can have a lot of tutorial, HTML and CSS, JavaScript programming, server-side web building, and data analytics, and XML tutorial too. You can even learn Python, JavaScript, SQL, PHP, Bootstrap, and Java, Query, C++, and a lot of more things.
So please do check out W3 School. The link is in the description box. And please just, if you like this video, please जल्दी से like कर दो मैं इस वीडियो को, and don't forget to subscribe to my channel. And I'll see you in my next video. Till then, bye guys. Stay home and stay safe, and just keep watching Kids World. Bye guys.